Hit that red subscribe button, turn it grey, be a part of my channel, and also do not forget to ring that notification bell so that you won't miss my next updates. Hi guys and welcome back to the channel. My name is Sarvesh. If you have not subscribed to the channel, इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी. ये तो मैंने पहले ही बोल चुका है. सो गाइज आज का अपना जो बम्बलबी का जो अपने मेरे बाइक है RS200 उसका पूरा डिसमेंटलिंग का वीडियो होने वाला है. सो उसमें जो भी पार्ट्स सर्विसिंग के लिए डिसमेंटल किए जाते हैं उसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. ज़्यादा कुछ डिटेल में बताया नहीं है, बट जो भी पार्ट्स है उसके नीचे में नाम लिख के आपको बताने वाला हूँ आपको कौन से बोल्ट्स ओपन करने और कैसे वो कौन सा पार्ट ओपन होता है. ये वो जो मैकेनिक वाले बंदे हैं वो लोग खोल दे जा रहे हैं, मैं बस रिकॉर्ड किया जा रहा हूँ. तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है. इन शॉर्ट आपको ये इसके बारे में मिलेगा. सो जो कल की वीडियो होगी वो भी आप मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो में मैं एयर फिल्टर कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत इजी प्रोसेस है, पर वन बाय वन जैसे आप देख पाओगे शायद से आप अपनी गाड़ी का जो काम है वो आप खुद कर सकते हो. तो पहली बार मैंने ये पूरा इन डिटेल इतना देखने के बाद मुझे भी पता चला. तो आई थिंक अगला सर्विसिंग मैं खुद से करूँगा, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस में देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ. कुछ गफलत हुई तो फिर वापस इन मैकेनिक को मिल लेंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि RS200 को डिसमेंटल करने में कितना टाइम जाता है और कैसे होता है. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And पाना लिए तो है. अरे इसके बाद में अंदर से अपना फेविवेल डाल देते हैं. फेविवेल से फिर उसको सील कर देंगे. वो भी डाल देते. see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, कूलेंट भी पूरा ड्रेन करता है, पर नया डाल देते हैं. and hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो RS200 को डिसमेंटल करने की। आगे का जो फेयरिंग है वही निकालना पड़ा। पीछे के फेयरिंग में कुछ अंदर ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जिसको सर्विस की जाती है। हाँ, उसमें हम लोग ने WD स्प्रे मारा था, जाकि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोई भी स्विचेस है तो उन्हें WD स्प्रे मारने के बाद अगर बारिश में पानी भी लगता है तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वो एक चीज़ होगी। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी उसके बारे में। अगली वीडियो मेरी होगी एयर फिल्टर चेंज करने के बारे में। तो गाइज़ इस व्लॉग को आगे देखिए, मैं एक लंबी प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि अगर इस व्लॉग को आप बाद में देखने वाले रहोगे तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को एक साथ प्ले करके पूरे बाइक की सर्विसिंग आप चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल्स मैं आपके इस बीच में डाल दूंगा। शायद से आपने वो नीचे जो भी छोटी छोटी टाइटलिंग में कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट के ऊपर काम चल रहा है। So that's it for now guys. I'll end this vlog right over here. Please hit the subscribe button. Please hit the like button. अगर ये वीडियो आपको आपके RS200 ओनर्स कोई फ्रेंड्स होंगे तो उन्हें शेयर करनी हो तो आप कर सकते हो और उन्हें भी नॉलेज दे सकते हो ताकि अगर ऑन रोड या फिर ऑन कोई पर्टिकुलर राइड पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो शायद से आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। So thank you. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on